Good afternoon, all, and most welcome all respected members and participants. This is Amrit Jangid. I am here to introduce Dr. Nitin Rajvanshi sir on behalf of GPC Barmer. Dr. Nitin Rajvanshi is presently deputed as Assistant Director at Directorate of Technical Education, Rajasthan. He has more than 25 of year experience. He is an associate member of Association of Computing Machinery situated at New York, United States, and also member of Computer Society of India. He has an active involvement in spreading the digital awareness and is the person with the strong flair in digital security and cyber crimes. He also has an experience of conducting lectures and workshops. Dr. Rajvanshi is also acknowledged for regularly writing columns for Times of India and other national newspapers regarding digital awareness, safe online purchase, and other cyber issues. So, Dr. Nitin Rajvanshi, sir, most welcome and over to you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for my such a introduction. So I would like directly come to the. I would like to start my session directly without any formalities with the permission of chair. So thank you for providing this opportunity. Basically, my session will be less technical but more of etiquettes. So shall I start, Prashant? Definitely, sir. Please go ahead, sir. Thank you. So I am coming to my screen. Yes. So this session will be less of the technicalities, but more of the habits which we have developing while using the internet. It's about the online learning. It's about the financial transactions. So there are 2-3 things we should remember. First, very basic thing is कि हमें technicality से पहले what should be the tips? What etiquette should we develop while we are doing online learning? So first of all, I would like to start the challenges of online learning. First of all, I would like to define what exactly is the online learning. Is it audible? Now voice is clear, I think. Yes, sir. Fine. Yes, sir. So, little bit noise is there, but we have to bear with this, sir. Please go ahead, sir. Okay. Well, I will try to reduce this noise again. Challenges of online learning. So online learning is learning while online. Now here line means what? Here line means while we are connected to the internet. When we are learning through internet. See, there are 2 terms. One is learning, another is education. Training. Now what is the difference between learning and education? On teaching. We are teaching, we all are the teachers. But the online is a concept through which teaching can be converted into learning. See, we are teaching the students. Students are being got taught. हम students को पढ़ाते हैं. सिखाना is learning. Let us say an example. Driving is an art, so it is learning. Swimming is a learning. Learning means learn up to that level which will you are never going to forget in your life. So online is a media, is a platform through which a person can learn forever. So everybody is after online learning nowadays. सभी लोग online learning कर रहे हैं because in COVID-19, but there are some certain challenges of the online learning, which there are many sessions on this also. I have seen this schedule. So first, very basic challenge is the cyberbullying. What is cyberbullying? Cyberbullying. Bullying means harassing someone using online techniques. Now, what is this harassment? How this harassment occurs? Abusive words, abusive languages, personalizing, personal comments. So these are cyberbullying. So one should be aware of these things while doing online learning. Basically, I have covered up in this learning for the teachers and for the students, because we are sometimes learners and we are sometimes trainers. So both way,
I have covered this. Another is cyber stalking. Cyber stalking means what? Like, who is following you on your social media? Who is following you every time? With whom you have shared your location? So you should be aware of this. You should be aware of this. हमें इंटरनेट पे कंटिन्यूसली कौन फॉलो करता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. कई बार हमारे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो जो अननोन मैसेजेस है, वी शुड नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ साइबर ऑब्जर्वेंस. somebody is observing through net. The next is the private information leaks through the challenges. It is one of the biggest challenge of the online learning. Then phishing and scams, everybody knows, and malware downloads. Sometimes we submit a material for a student to be downloaded, and we are not aware of this malware has been attached to this particular document. And when the student is going to download, malware also gets downloaded. So this is the problem. These are the basic challenges. So what habits one should develop to get rid of these problems? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम सभी लोग टेक्निकलिटीज नहीं जानते हैं, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए, जिनसे कि हम हमारे सामने जो लर्निंग के चैलेंजेस हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, हम इससे बच सकें. फाइन. सो I would give you the safety tips. I won't say this is a technical, too much of technicalities, because here participants are from every branch. So I have kept it as much simple as possible. Number one, for the trainers, like teachers, like us are the teachers, like we are the teachers, don't publicly share students' names. This is the very basic thing. You can use the first name only. Whenever we pronounce, whenever we call with full name, that information may go global. That information may be misused. So whenever we are taking attendance online, we can use only first name, or we can quote their names like 1, 2, or we can pronounce only roll numbers, because students know their roll numbers. Like it happens in the offline classrooms. What we are doing, roll number 1, roll number 2, like this. So this is a basic thing, because there are some, if we are not using the proper media, then some students, student may get name may be shared to some other parties. So second, always try to use official email addresses. Official email address like college email address, or some we create them. Let us say for the teacher. So for the teacher, as far as possible, as much as possible, use its official address, email address. If you can't create, if there is possibility is not there to create an official email address, then you can create a dedicated email address. Then you can create another email address for that particular class. For example, you are taking an electronics class, so you can make a generalized email ID, and every student should create their new email ID for the class. Personal email IDs should not be given and should not be exchanged over this while doing this online learning. And this is very common. ये तो बहुत ही common है. Keep virtual conferencing links, meeting IDs and passwords private. Be careful of how you share information. अब ये क्या मतलब है इस चीज का, कि हम जो information share कर रहे हैं, how we are sharing this information, how we share this information. How means, suppose we have made WhatsApp groups. हमने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए, हमने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपने सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं. सो हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग नाउ. व्हाट्सएप इज बिकम, इट्स नॉट ओनली गूगल मीट, और इट्स नॉट ओनली दिस Microsoft Team or the Zoom or any other platform. Now we are being sharing information through WhatsApp. We have made the WhatsApp group for the students, or any other social media. Like there are many pages on, we are displaying FB pages. They are displaying many informations. So this we have to think before sharing the information. So what kind of information can be shared, so that we may not lose our information. We may not have private information also. Then
Password protection, you should change the password as frequently as possible. Nothing new. And then this is very important point. Be honest and ethical about the work that is submitted for the class. अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब यहाँ पर चीजें सबमिट हो रही है, हम बात कर रहे हैं, सपोज हमने कोई असाइनमेंट दिया, अब आपने कोई असाइनमेंट दिया, अब उस असाइनमेंट को वो सबमिशन होना है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ एथिकल रहना है. जो भी हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, शुड नॉट डिस्कस other things related to students' personal life or anything like this, or our comments. And this is simple. Do not post anything that could hurt others or have a negative effect. Evaluate information on the internet. Yes, this is very important. Because nowadays teaching has become a two-way. Earlier it was like one-way flow from teacher to student. Initially it was like this. Now teaching has become a discussion. And we are living in the IT world, where everyone is got the mobile. Whatever we speak on the, in class, student verify it, immediately verify it on the Google. So before giving the information, what information we are sharing, now you must be thinking कि सर इसका safety से क्या मतलब हुआ? हम जो information share कर रहे हैं, इसका safety से मतलब ये हुआ कि student will troll you, student will make video of our information and viral us. If some misleading information is given on the internet, if a teacher is giving some information which is not correct or accurate, so we should evaluate before giving any kind of information. Because trolling is nowadays become very common. Then choose your technology and apps wisely. This is very important. Now, what does it mean? अभी जैसे मैं घर पे बैठ के, हम लोग today is Sunday and everybody is attending class and delivering, like I'm delivering a lecture from my personal laptop. So whenever I'm sharing the information, I should be much cautious. कि मेरे को ये information share करना है, तो मैं कौन से लैपटॉप से करूं, मेरे किस लैपटॉप पे मेरी ऐसी information है कि somebody, my information is proper and my information is authentic and my information may get not shared otherwise. Like suppose मेरे पास ऐसी फाइल्स बनी हुई थी यहाँ पर जो मेरी पर्सनल फाइल्स थी, and these files were official and I don't want to disclose, but sometimes it happens. So you should use an app or a platform which is much secure. तो उसके लिए क्या है, पहले हमें उसका रिव्यू पढ़ना चाहिए. कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐप हम यूज ले रहे हैं, अभी आप देखिए ऐप के अंदर क्या होता है. लेट अस से फॉर एग्जांपल एक वेदर का ऐप है, मौसम आपको मालूम करना है. नाउ whenever you install an app, let us say any kind of app you install, what happens in that, it asks for your gallery, access to your gallery. Why? अब मौसम का जो ऐप है उसको सिर्फ लोकेशन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, that's it. But still it demands, and we give information and we share our information to that particular app. So these things we should notice. Is there any need for that app? क्या उस ऐप को ये जरूरत है या नहीं है? So we should use our apps very wisely. And another is the parental controls. I just discussed a few points because next session is also taking by the on parental controls. So there are basically I have tried to categorize their parental controls like filtering and blocking. I'm not going into the depth because there's a whole session on this parental control in your schedule. So filtering and blocking. Now blocking the particular sites. Let us say in our Polytechnic colleges, RS1 is there. We are using. Rajiv sir, your mic is mute. Mic is mute. Okay. Now it's okay. We are getting it now. Able to hear me? Yes, sir. Okay. Now there are the 4 types of the parental control we are discussing. One is filtering, another is blocking. Like I was taking the example of RS1 in most of the Polytechnic colleges, which we have been using. They have blocked the YouTube and the Facebook. But so this is a kind of control. Now blocking outgoing content also. There are apps. There are certain apps which can block the outgoing of our outgoing content. What should be posted?
Then there is also limited screen time. A parent can limit the screen time. I mean, for how long a particular child has to work on the screen. And then, of course, monitoring tools. Google has got the many apps for these. Now, monitoring tools, parents, if they want, they can monitor what the child is doing. So there are different kind of controls available. These are the parental controls. So I'm not going into depth. Now, this was about the online learning. Because we all are the teachers and mostly not, if they are not the teachers and अगर हम वैसे भी हैं तो हम जानते हैं कि ऑनलाइन में हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। और मेरा जो टू बी वेरी आई मीन मैं अगर ऑनलाइन लर्निंग को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम जो अपना जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जो हम हमारा लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो हमें बड़ा कॉशियस रखना चाहिए। जो हमें ऑफिस के काम के लिए हम ले रहे हैं उसके लिए हम सेपरेट फोल्डर बनाएं। ये नहीं हो कि और सेपरेट फोल्डर है वो हमें याद रहना चाहिए इस फोल्डर में मेरी ऑफिस की फाइल्स है। अदरवाइज समटाइम्स ये होता है कि फाइल्स गेट शेयर्ड। बी वेरी कॉशियस। ओके, so this was about the online learning. Now we move to the cyber financial frauds. Everyone is seem to be interesting in this because in past 3 years crime rate has increased. I'll be taking few examples from the media, from the newspapers की मैं कुछ कटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि कितना अभी क्राइम और ये फाइनेंशियल क्राइम क्यों हो रहे हैं। बिकॉज जब हम लर्निंग की बात कर रहे थे तो वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही थी, तो वही पर्सनल इंफॉर्मेशन जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं दे आर यूजिंग अगेंस्ट अस टू डू द फाइनेंशियल क्राइम। सो आई वोंट टेक दिस नाउ। दिस फाइनेंशियल क्राइम में होता क्या है, हम क्या है जो हम भूल करते हैं उसका फायदा उठाया जाता है। टेक्निकलिटीज तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेक्निकलिटीज देयर आर सर्टेन हैबिट्स which we need to change. And the first very basic habit we need to change is never ever trust online on anyone. Underline the word online trust. There is nothing like online trust because you are not sure who is on other side of the phone, on other side of the net. So before trusting, you have to confirm it. You need to confirm this before you trust it. So see some examples. महिला ने फूड मंगाया, खाते से 59,000 पार। मोबाइल में आए लिंक पर क्लिक करते ही 1.4 लाख निकला। अब देखिए मैंने लेंस के अंदर, आप लेंस पे गौर कीजिएगा, लेंस के अंदर मैंने लिख रखा है एटीएम पिन ले लिया। ले लिया क्या, दे दिया ना, हमने चला के एटीएम पिन दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या था, वो पासवर्ड वही बंदा रखता था तो उसने ये फ्रॉड किया। लाइक beware the dirty web of the crime may entrap you. Online security, are we ready? See, Facebook, Google फीस ना लेकर, this is not mine, it is all the media reports. Facebook, Google फीस ना लेकर लोगों का निजी डेटा बेच रही है। हाईटेक जेब खतरे, इंस्टाग्राम और फेसबुक से खातों के साथ ई वॉलेट भी खाली कर रहे हैं। अगेन सी, स्विट्जरलैंड के नंबरों से लोगों के मोबाइल पर आ रहे मिस कॉल, इन्हीं नंबरों से यूएसए में हुई ऑनलाइन फ्रॉड। अटेंड करें ना कॉल बैक करें। फेक आइडेंटिटी क्राइसिस, साइबर क्राइम केसेस गो फ्रॉम 25 to 155 इन जस्ट, ये दिस इज इन अ सिंगल सिटी, ये एक शहर की बात हो रही है यहाँ पर। Fine. See this one on the right side, top 66% cyber crimes against women committed by youth, Maharashtra police. So ऑनलाइन रुपए का ऐंठने का आरोपी गिरफ्तार, रुपए चलाने का नया तरीका। तो ये सब न्यूज है। तो अब इनमें विल गो वन बाय वन कि हमें कैसे इसमें सेफ्टी रखनी है। देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स जो फाइनेंशियल हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, चाहे वो एटीएम की बात हम करें, चाहे हम वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन करें, बैंकिंग की बात करें, नेट बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो जो जनरल हैबिट्स हैं, हमें ये चीज़ें जनरल हैबिट्स में लेनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूँगा कि व्हेनेवर वी गो टू एनी शोरूम,
or any of the mall, we see whenever we come to the billing counter after shopping, जब भी हम बिलिंग काउंटर पे आते हैं शॉपिंग करने के बाद, नाउ जो बिल वहां पर जो खड़ा होता है काउंटर पे, वो हमेशा एक सवाल पहले पूछता है, सर आपका फोन नंबर क्या है? और हम लोग उसको अपना फोन नंबर शेयर करते हैं विदाउट आस्किंग हिम कि भाई व्हाई डू यू रिक्वायर माय नंबर। हम फोन नंबर शेयर करते हैं उससे, हम ये पूछते नहीं है कि आपको फोन नंबर क्यों चाहिए। अब देखिए फोन नंबर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है आज, मोबाइल नंबर हालांकि हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम जब जहां पर हम गए हैं शॉपिंग करने, अब उसके सर्वर्स हैं, हमने अपना नाम और अपना फोन नंबर वहां पर डाला, यानी उसके जितना भी कनेक्टेड होगा वो ग्लोबली सब जगह शेयर हो जाएगा और फिर हमारे मोबाइल पे अनवांटेड मैसेजेस आने शुरू हो। तो इसलिए अननेसेसरी नंबर हमें जहां पर जरूरत नहीं हो वहां पर हमारे फोन नंबर्स शेयर ना करें। होता क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द फोन नंबर्स हमारे लिंक हैं फेसबुक से, हमारे फोन नंबर्स लिंक है आधार कार्ड से, और अब आधार कार्ड लिंक है बैंकिंग से, तो बिवेयर। तो इन नंबरों को शेयर करने से पहले हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम पहले बात करते हैं एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स की हम सेफ्टी किस प्रकार से लेते हैं, कैसे हमें एटीएम कार्ड्स का यूज करना चाहिए, क्या कंसेप्ट है एटीएम कार्ड का। एटीएम कार्ड, हेलो इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर, गो अहेड सर। ओके, यस। सो एटीएम कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो नॉट ओनली एटीएम कार्ड, वी आर यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, मेनी कार्ड्स ऑफ वी आर यूजिंग। सो अब देखिए अगर मैं डेबिट कार्ड की एक बात करता हूँ, डेबिट कार्ड जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है, वी आर हैविंग अकाउंट इन आवर बैंक and debit card is being issued to us. Now debit card contains 16 digit number. Fine. डेबिट कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर होगा एंड उसके साथ में 4 डिजिट की पिन होती है। There is an interesting story behind this pin. You know, the person who designed this ATM machine first designed a 6-digit pin, but उसके जो वाइफ थी उसको 6-digit पिन याद नहीं हुआ, then he changed to 4-digit पिन. Many banks are also using 6-digit पिन. Anyways, तो जो 16 डिजिट का पिन है और 16 डिजिट का नंबर है कार्ड का और 4 डिजिट का पिन है, हमने पहले अपना कार्ड लगाया एटीएम के अंदर, यानी 16 डिजिट का हमारा जो नंबर था वो चला गया। अब हम 4 डिजिट का पिन डालते हैं। फाइन, अब आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। तो 16 डिजिट का जो नंबर है वो हमारा एज ए लॉक है, दैट इज ए काइंड ऑफ लॉक, ठीक है। दैट 16 डिजिट पिन इज ए काइंड ऑफ लॉक। अब उस 16 डिजिट का जो नंबर है दैट इज अ लॉक और 4 डिजिट की पिन है दैट इज अ की। अब उस 16 डिजिट के नंबर में जब तक सही 4 डिजिट का चाबी नहीं लगेगी वो ताला अपना खुलने वाला नहीं है। गॉट इट? यानी 20 डिजिट्स मिल गई। अब आप वो कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करेगा, 16 डिजिट के साथ में परफेक्ट 16 डिजिट होनी चाहिए, उसके साथ में वो 4 डिजिट का पिन, यानी दैट मेक्स अ 20 डिजिट नंबर। जब तक वो 20 डिजिट नंबर सही नहीं जाएंगे मशीन में वो अनलॉक नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 4 डिजिट के पिन को सेफ रखना होगा। अब इसमें क्या होता है, 4 डिजिट का मतलब कितना हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद 4 डिजिट्स? 9999। ओके, नाउ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई 3 बार गलत पिन डालता है तो योर कार्ड इज ब्लॉक फॉर अ डे, फॉर 24 आवर्स। तो जहां तक पॉसिबल हो हम हमारे पिन को इन एवरी 180 डेज चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्राई भी करता है ना तो वो चेंज हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए इससे फ्रॉड कैसे होता है एटीएम से। होता यह है कि हम लोग मशीन पे गए, एटीएम मशीन पे कार्ड हमने, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो एटीएम मशीन है उसमें जो स्लॉट होता है जहां पर हमारा कार्ड इंसर्ट करते हैं, आपको पहले ये चेक कर लेना है कि वो स्लॉट लूज तो नहीं है, ठीक है। अगर वो स्लॉट लूज है जहां पर आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पर कार्ड मत लगाइए। हो सकता है किसी ने वहां पर रिकॉर्डर लगा दिया हो जो बड़े इजीली अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, अब जब आप वहां पर कार्ड को आप बाहर निकाल के कभी भी क्यू में ना खड़े हो, मतलब या तो क्यू में खड़े हैं अगर आप तो कार्ड बाहर ना निकालें। होता क्या है, यूजुअली मैंने देखा है बहुत जगह, आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल
take out their cards and waiting in a queue to get the services of ATM. Now, जब आपने कार्ड अपने हाथ में होल्ड कर रखा था, somebody made your video. उसने आपका वीडियो बना लिया, कार्ड का वीडियो बना लिया. That means your 16-digit number is with that fellow. अब उसके पास में आपका 16-digit नंबर चला गया. Fine. Now what is required? 4-digit number. So beware. So you have to make it a habit. So now take out your card before reaching in front of the machine. जब तक मशीन के सामने नहीं जाएंगे आप कार्ड को यूज निकालेंगे नहीं. Then one term is shoulder surfing. While we are entering the pin, somebody might look from the behind your shoulder. Is it? Yes. Yes. In some machines, don't insert pin more than one. एक से ज्यादा बार आपको पिन, अगर वो मशीन कहती है एंटर योर पिन अगेन, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि नहीं, कुछ गड़बड़. There is some problem because that machine has been hacked, might be hacked. So don't insert pin more than once. And one thing more, we should select a clean ATM machine. Now you will think, why? इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी इससे ये फर्क पड़ता है कि उस पर that particular bank, suppose let us say वो ABC बैंक है और उसकी ATM मशीन पे आप जा रहे हैं, तो वहां पर उनके कर्मचारी रेगुलर क्लीनिंग के लिए आते हैं. नंबर वन, that has been operated. Second, we should select a clean ATM, means that is under observance regularly. If an ATM is not clean, तो क्या होता है? वहां पर कोई भी आ सकता है, कोई उस पर रेकी कर रहा हो, रेगुलर आ रहा हो. तो इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. Next we move on to the tips for safe online banking. Now everyone is using online banking, and so I would suggest, number one, use browsers, and always use browser modes like incognito mode, which doesn't save passwords. This is the very thing. Whenever you are doing online banking, use this incognito mode, which does not save your passwords. Okay? Always be sure of, हमेशा बैंक की वेबसाइट करेक्ट देखें. ये फिशिंग का नया तरीका है. ये फिशिंग का बिल्कुल नया तरीका है. इसमें क्या होता है, बैंक से मिलती जुलती नाम की वेबसाइट्स होती हैं और हम गलती से उस पर क्लिक कर देते हैं और उनकी स्क्रीन भी बिल्कुल सिमिलर टू द बैंक. तो बी श्योर ऑफ करेक्ट बैंक वेब एड्रेस. जो आप वेबसाइट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, एंड लुक फॉर ए ग्रीन लॉक आइकन. सम साइट्स, कुछ साइट्स में ग्रीन लॉक आइकन होता है ऑन ब्राउजर स्टेटस बार नीचे की तरफ. जब आप देखेंगे ऊपर स्टेटस भी रहता है कि उसमें ग्रीन लॉक आ रहा है. एंड वन इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी श्योर HTTPS, दिस S, ओके, सिक्योर बैंक की वेबसाइट के एड्रेस में आना चाहिए. ऑलवेज बी श्योर दिस HTTPS appears in the bank website address. As far as possible, use virtual keyboard. क्यों? हमें वर्चुअल कीबोर्ड का यूज क्यों करना है? देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड का हम यूज करते नहीं, हम सोचते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है. तो की लॉगर्स करके एक सॉफ्टवेयर होते हैं. आपने यूजर आईडी डाला, आपने पासवर्ड डाला अपने कीबोर्ड से, तो दैट माइट बी ट्रैप्ड. टू गेट रिड ऑफ दोज, टू बी सेफ फ्रॉम दोज, वी शुड यूज वर्चुअल कीबोर्ड. आपको दिखेंगे whenever you will be entering your information, user ID and password, आपको वो राइट में दिखेंगे वर्चुअल कीबोर्ड. यू जस्ट क्लिक ऑन द वर्चुअल कीबोर्ड. आप कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं. रजिस्टर योर मोबाइल नंबर. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एवरीबडी इज रजिस्टर्ड. आई नो, बिकॉज रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द बैंक. क्योंकि अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन बैंक विल सेंड अ मैसेज. This is must. Otherwise, क्या होगा? What will happen? Now I'll quote an example. What happened with me last year? There were problem with bank server, and bank was unable to send the message. So I didn't receive
my account online because I'm using net banking. Account 90,000 was debited. The bank. I was shocked. Nitin sir, your voice is I went to breaking. bank. Your voice is breaking. Maybe the bandwidth issue or some hardware issue. Hello. Now Yes, it's sir. clear or is it still breaking? It's clear now. Is it clear? Yes, sir. So I was putting an example last year that happened with me. 90,000 amount was debited by the bank from my account. I visited the bank and asked why you have debited, because it was showing debited. The bank told your EMIs were not up to date, so we debited 90,000. Now see, my EMIs were regular, everything was regular. When I inquired, they said we got a call from corporate office to debit that much amount. Then I asked, मैंने पूछा भाई किसने फोन किया corporate office से? They have no answer. So it's keep check regular. मैंने फिर then they refund me that amount because हम vigilant थे, हमें मालूम था. तो इसलिए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए और इसलिए हम रजिस्टर कराएं. अगर बैंक से अगर मैसेज नहीं आता है तो हम खुद एक बार जाकर चेक करें. ऑनलाइन बैंकिंग हम ले सकते हैं तो हम उसमें चेक कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द सम टिप्स फॉर द सेफ ऑनलाइन बैंकिंग. नाउ फ्री पब्लिक वाईफाई. वाईफाई has been deleted actually. वाईफाई भी यहाँ है. अवॉइड फ्री पब्लिक वाईफाई. फ्री पब्लिक वाईफाई मीन्स व्हाट? हम कहीं भी जाते हैं जैसे लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस. अब जैसे हमने किसी होटल में चेक इन किया, चेक इन करते ही हम आजकल तो हो गया है कि उनकी फैसिलिटी देते हैं कि आपको वाईफाई क्या है आपका फ्री पब्लिक, आपका वाईफाई पासवर्ड क्या है. तो जैसे ही हमने चेक इन किया, वी आस्क्ड आपका वाईफाई पासवर्ड क्या है. सो अब वहां पर यह होता क्या है कि ऐसे प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन पर हम गए, हमने वाईफाई से कनेक्ट हो गए स्टेशन का, तो अब वहां पर यह प्रॉब्लम होती है कि देयर माइट बी सम हैकर विद द सेम और विद अ वेरी मच सिमिलर नेम पासवर्ड. जैसे आपने होटल में चेक इन किया तो आपने होटल वाले ने आपको वाईफाई दिया ABC 123 और सिमिलर वाईफाई था ABC 1, उसका था ABC स्पेस 123. नाउ समहाउ गलती से आपने स्पेस दे दिया, यानी अब आप किसके वाईफाई से कनेक्ट हो गए? गलती से हैकर के. रिस्क कब आता है? रिस्क तब आता है जब हम फ्री पब्लिक वाईफाई से ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल पेमेंट करते हैं. Wi-Fi at such public places, we should not make transactions which are related to our personal information like financial payment or online shopping. हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी इसका यूज नहीं करना चाहिए. फ्री पब्लिक वाईफाई शुड बी अवॉइडेड. करना इट्स वेरी अर्जेंट. तो नेवर यूज फ्री पब्लिक वाईफाई और शुड ओपन योर डेटा. अपने डेटा को आप लीजिए, अपने मोबाइल से आप उसका यूज कीजिए. Identify every aspect of it. Use free features intelligently and positively. कोई मिल रहा है आपको, ये इस बात को अंडरलाइन करना, consciously यूज कीजिए. I am taking another social media also with this because social media is somehow related to your financial problems now. अगर कोई चीज आपको फ्री दे रहा है तो उसका इंटेलिजेंट और सावधानी से प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी चीज, nothing is free. Tag this point because media, we are using social media freely. We are using the Gmail. Okay, so Gmail से क्या हो रहा है? You know, email IDs. So we'll also taking what is the drawbacks of using such things. So this is another important thing. You have to always log out. We have to. This is a, मैंने इसको जान के हिंदी में बनाया था क्योंकि एक जगह मैं सेशन ले रहा था तो वहां पर ये कि लॉग आउट करना क्यों जरूरी है सर?
आज जैसे स्टूडेंट्स की बात करें हम, या हमारी खुद की बात कर लें, हम हमारे फेसबुक एप्स नेवर लॉग आउट स्थिति में, हमें अब तो पासवर्ड भी ध्यान नहीं है, ठीक है, पासवर्ड भी ध्यान नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन कॉलेज लैब, कॉलेज की लैब में फ्यू गर्ल्स वर वर्किंग ऑन द फेसबुक, जो कि अलाउ नहीं है। अब हुआ क्या, लाइट चला गया, ठीक है, आप एफबी पर बात कर रहे थे, अब एफबी आपने खोल रखा था, फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर रखा था, और लाइट चली गई, और लॉग आउट हो नहीं पाए, या आपका जीमेल ओपन था, आप लॉग आउट नहीं कर पाए, लाइट चली गई, एंड देयर वाज नो बैकअप, ठीक है, बहुत कम कॉलेजेस में है, सबको पता है। तो जैसे ही हम लेकिन जैसे ही वापस किसी ने लॉगिन किया, लॉगिन क्या किया, जैसे ही लाइट आई, सिस्टम ऑन किया, जीमेल पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसके इनबॉक्स के अंदर वो पहुंच गया। सो लॉग आउट नहीं करते हैं तो ये चीजें हमें परेशानी में डाल सकती है। ऑलवेज मेक आउट, कई बार ये होता है, ये तो मेरा डेस्कटॉप है, मेरा लैपटॉप है, मुझे लॉग आउट करने की जरूरत ही नहीं। सो वी नीड टू बी लॉग आउट, हमें लॉग आउट तो करना ही है। देखिए उसके साथ में 3-4 चीजें जुड़ी हुई रहती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप इसको प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए। आप मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं, हम सभी लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं। आप मॉर्निंग में किसी ऐसे को कॉल कीजिए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, फाइन, आप अपने फोन से यू कॉल अ पर्सन हु इज नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, गेटिंग माय पॉइंट, एंड इन द इवनिंग you will see his picture in Facebook suggestions. Why? Have you ever noticed this thing? The person who is not in your contact list, and it is come automatically in Facebook suggestion, because we have called and our phone is linked to Facebook and we are always login. हम हमेशा login रहते हैं, तो इसलिए ये problems sometimes face होती हैं. Now what the social media we are using, such as posting what are the problems? I am taking the important problems, such as posting your location on Facebook or Twitter, keeping the setting of Instagram account for public, sharing your address and phone number, etc., will land you in a problem. Because अगर आप अपना फेसबुक का लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो एवरीबडी कैन सी योर लोकेशन। इमीडिएटली होता क्या है, हमारे अभी फेसबुक पर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अभी क्या हो रहा है, फेक फेसबुक आईडीज क्रिएटेड है, पीपल आर मेकिंग फेक फेसबुक आईडीज। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हमें पता है, एक छोटा सा एग्जांपल है भाई, अगर मुझे पता है ये बंदा मेरे फेसबुक आईडी में है एंड इज अगेन सेंडिंग रिक्वेस्ट, यू शुड कॉल हिम फर्स्ट एंड आस्क, have you sent me again the request to the Facebook, you already in my Facebook as a Facebook friend. But no, you're not doing, you're accepting again his Facebook request. And then what happens, he send a message, yeah, I need such amount of money, and that's these all things. So this is how financial trap is being going through this social media. So social media nowadays, WhatsApp has also opened a gateways for the payments. So we should be very cautious before sharing any kind of information. Most of the आप जानते ही होंगे कि WhatsApp चलाने के लिए you don't require a phone number. You don't need a phone number. It's a kind of app. Okay, it's not necessary you give a phone number with WhatsApp, and now WhatsApp and Facebook is linked last year. So before sharing our information, see what happens. As I've seen, many children are opening their account on Facebook, giving your name, your correct email IDs, your correct date of birth. Is it required? Is it necessity? See how much information we are sharing on these social medias, or official information we have been sharing. So we should be very cautious.
हम सबका मेन पर्पस क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन नहीं लीक होनी चाहिए और उससे हमारे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होना चाहिए. दिस इज अ बेसिक थिंग. Now, these are the some top 3 techniques used by cyber criminals to hack Facebook account. सबसे पहला तो फिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया, फेक Facebook IDs they have been created. Cyber criminal creates a fake login page which look exactly like the real page and then ask the victim to log in. Sometimes ये हो रहा है. Stealers are there, use stored password in their browser to access Facebook. बहुत ज्यादा हैक हो रहे हैं आजकल Facebook because they are trying. And then smartphone hacking. Every mobile user nowadays, every mobile user is accessing Facebook from mobile. And if cyber criminally, अगर कोई साइबर क्राइम क्रिमिनल है, उसने आपके फेसबुक में एक्सेस पा ली, तो वो अपने फेसबुक के अकाउंट में एक्सेस पा लेता है, उससे हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, हमारा ईमेल आईडी उसको मिल जाता है, हमारा पासवर्ड उसको मिल जाता है, and he can commit any sort of crime. So these are the 3 top techniques which is being used by criminals to hack our Facebook account. Next, this is about is your data safe. तो जब भी हम Facebook पर कुछ चीज पोस्ट करें, तो make sure it should not be public. Make sure you want to show to the public, then okay, then let it be. अगर आप public को दिखाना चाहते हैं तो let it be, or settings should be changed to friends only. Okay, settings should be changed to friends only, so that only your Facebook friends will be able to view this. Now, this thing is being happening nowadays. Beware of SMS and bogus calls. Now, see, it is an SMS. You have been approved an income tax refund of so and so. पहले तो आप चेक कीजिए आपका इनकम टैक्स रिफंड था कितना. Number 1 point. The amount will be credited to your account shortly. भाई ध्यान दीजिए इस पे. Please read the statement again. The amount will be credited to your account shortly. Credit नहीं हुआ है, will be credited. एक तो ना you always try to, एक तो इनकी grammatical पकड़ने की कोशिश कीजिए. You messages you are getting, you yourself will know कि these are fraud, फर्जी messages. Please verify your account number. Number 2, क्या आपका Number 1, क्या आपका इतने का रिफंड था. Number 2, क्या आपका अकाउंट नंबर ये है. ठीक है. अब ये कहता है दिस इज नॉट करेक्ट, जो कि करेक्ट हो ही नहीं सकता. प्लीज अपडेट योर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन बाय विजिटिंग द लिंक. नेवर एवर क्लिक ऑन सच लिंक्स और नेवर कॉल बैक्स टू सच नंबर्स लाइक +1 इज फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स. अगर आपको लगता है कि अपना कोई वहां पर इन यूएस समवन इज देयर, तो हो सकता है कॉल, लेकिन जब आपको मालूम है कि हमारी वहां से कॉल आ ही नहीं सकती, देन व्हाई टू पिक ए कॉल और कॉल बैक. तो देखिए ये जो लिंक होते हैं, लिंक क्या होते हैं, हमें डायरेक्टली उस प्रोग्राम तक, उस फाइल तक, वहां तक पहुंचा देते हैं, उस वेबसाइट तक पहुंचा देते हैं. अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं या आप इन फोन नंबर पर कॉल करते हैं, तो होता क्या है, सामने से वो बंदा कहता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए. You should download this app and share a number with me. As soon as you download the app and share the particular number with that fraudster, your screen is shared with that fraudster. Your mobile screen is shared with the fraudster and you are helpless then. You become helpless. So, the thumb rule, never trust. Never trust online. Anyone. Anyone means anyone. Until unless, just confirm it first. Just call it. Now this we have been discussing. Don't click on unknown link. Like अभी क्या होता है कि हम समझते हैं कि काफी सारी चीजें इज सेफ. देयर आर वेरियस फेक UPI पेमेंट लिंक.
fake NPCI, UPI, Beam handle and portals. Click on any such link without knowing. It can empty your account. It is very good. UPI is very good, but one should be aware which is the authentic UPI payment link. If you are not sure of this, then there are chances of fraud. अब आप गूगल प्ले पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए and find app named Yono, and you will find multiple Yonos there. Which is correct? Which is authentic? So for this, just visit the bank and ask them, bank people. They will tell you. So these are the certain things which we should be aware of and should. So this is the tagline I'm saying. Digital payment is easy and convenient, but one needs to be vigilant and careful. This is click nahi karna. And now we come to the email safety. See, can we send confidential information through email? Is email fully secure? No, sir. Yes, exactly. Always remember this email is like an open postcard. What happened? Suppose a fellow is sending email from Gmail to Yahoo. Now there is a server of Gmail and there is a server of Yahoo. Your email is going to the Yahoo server and Gmail server. And a person or any, the person who is handling the server and who has got the rights can view these emails. So for this, use pretty good privacy services. PGP stands for pretty good privacy. In this case, your email gets jumbled. Some decoding is done to your email so that it may not be read by anyone. So even emails, if someone wants, can read. Fine. अब ये कुछ एक कॉमन इसके अंदर भ्रांतियां होती हैं जो हमें बहुत देखना चाहिए कि sometimes what happens, a strong password is enough to keep your business safe. कि भाई मैंने तो बहुत strong password बना लिया है, अब कोई क्रैक नहीं कर सकता. No, it is not. It is a myth. What exactly is the reality? Two-factor authentication and data monitoring is also needed. हमें कष्ट करना पड़ेगा. हमें two-factor always आजकल two-factor हो रहा है. One is your password, another is captcha, another is OTPs, and these things हम नोट कर रहे हैं बैंक के अंदर. फिर आता है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कीप्स यू कंप्लीटली सेफ. नाउ दिस इज फॉर द एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर. द रियलिटी इज सॉफ्टवेयर कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल साइबर रिस्क. जितना भी साइबर रिस्क हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर not able to protect. We have to be more cautious. We have to develop a good practice. We have to be एक एटिकेट्स के थ्रू हमें उसमें काम करना पड़ेगा. अगर हमें पूछना है, हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. You have to be like this. Then personal devices don't need to be secured. हाँ, इसका मतलब क्या है कि this means that my laptop, my mobile, it's my only I am using this, so there is no need to secure. But fact is that all smart devices, including wearable, like everything, can compromise your security. So इसमें अभी पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में I was reading कि KYC स्कैम हो रहा है. हमारे पास फोन आता है, we got a message on phone, you secure your KYC account is not updated, you apply for KYC, otherwise your bank account will be suspended, your services will be suspended or blocked. अब इसमें होता क्या है कि हम इसको फोन करते हैं, जहां से ये मैसेज आया हम फोन करते हैं. हमें ये चाहिए हम फोन ना करें उसको जहां से ये मैसेज है, जिस कंपनी का मैसेज है, लेट अस से
बैंक का है, पेटीएम का है, जिसका भी मैसेज है, हम उनके ऑथेंटिक जो पर्सन्स हैं, वी शुड कॉल देम एंड आस्क इज दैट सो, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं, हमें उनके जो बंदे हैं, लेट अस से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम, क्योंकि पेटीएम का नाम लेकर काफी लोग ऐसे डमी मैसेजेस करते हैं। आप पेटीएम पे कॉल कीजिए, पेटीएम पे विजिट कीजिए, बंदा आपके डोर्स तक आएगा, वो घर पे आते हैं टू वेरीफाई ऑनलाइन योर केवाईसी, लाइक इन बैंक्स ऑल्सो। ऐसे जो फ्रॉड मैसेजेस हैं उसमें क्या होता है, हम कॉल करते हैं और कॉल करके हम उनकी बातों, वो मतलब दे आर सो स्मार्ट पीपल एंड दे मेक यू फील दे आर जेन्युइन। दिस इज द थंब रूल कि नेवर एवर ट्रस्ट. So these are the basic things we should learn about the financial transactions, because we always want to do financial transactions in the lockdown period, and presently when we don't want to go to the bank has offered so many services. See what happens in banking. Whenever you entered a user ID or a password, it gets encrypted. Even bank doesn't know. बैंक को भी नहीं पता होता कि आपका क्या यूजर आईडी है, क्या पासवर्ड। सो इन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। फाइनली आई वुड लाइक टू से, डरना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है इन चीजों को, बिकॉज वंस वी कम टू नो द बेसिक्स, एवरीथिंग इज फ्रॉम द बेसिक्स। वंस वी कम टू नो द बेसिक्स, देन वी गो ऑन द टेक्निकलिटीज। काफी लोगों को हमें नहीं मालूम होता मोबाइल के ऑपरेशंस कैसे करने हैं, तो नहीं पता होता हमें ऑपरेशंस कैसे करने हैं, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट जो नहीं करना है वो जरूर हमें पता होना चाहिए कि नहीं, हमें करना ही नहीं है। वी डोंट नीड टू रिप्लाई बैक, वी डोंट नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नीड टू गिव द मैसेजेस रिप्लाई। See at one slide, now this was about the unknown link. Unknown link, not only unknown link, nowadays you should not click on unknown QR code. Unknown QR code. Now what is the QR code? QR code is quick response code. One should not, अगर आपने QR कोड पे क्लिक किया, QR कोड पे स्कैन किया अननोन QR कोड पे, तो इट इज सेम एज गुड एज अननोन लिंक। So always be cautious. Now on the e-commerce sites, 2 or 3 more tips regarding e-commerce websites I want to give. One is always shop from a trusted website. Very first point. Always do online shopping because you have to make payment through a trusted website. And फिर question आता है, so how do we come to know that which is trusted and which is not trusted? For the trusted website, you can go through the reviews or many authentic information, many their histories. Number 2, if you are making payment online, check for authentic payment gateway. What are the gateways then? पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं? देखिए, पेमेंट गेटवेज हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर रखे हैं और कुछ स्टैंडर्ड ट्रस्टेड गेटवेज हैं। आई वुड like you are using GPay, Google Pay. It's been said as trusted. There are many, like Visa is there, MasterCard is there. So these are the payment gateways which is trusted. Online bill desk is there, Razor Pay is there, CC Avenues you have seen. So these all are the trusted gateways. So while making these payments to these gateways, you first check मैं किस गेटवे का पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि वहां लिखा आता है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो वो पता रहेगा कि किस गेटवे के थ्रू पेमेंट हो रहा है। So these all about I have to discuss about in this online session. So any of your queries, I'm here ready to give your queries. Thank you so much, sir, for your wonderful session. Now session is open for the queries. If anybody asks any question to Dr. Nitin sir, they are most welcome.
गुड मॉर्निंग सर, मैं रमेश कुमार दानक। यस रमेश जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ने जो बताया कि हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं ना, तो हमारा स्लॉट है वो अच्छे से हम चेक करके एक बात कर लें कि हमारा कार्ड है स्कीम नहीं हो रहा। यस। जैसे कि आजकल क्या ऑनलाइन परचेजिंग जो होती है, जैसे मॉल में हम जाते हैं और कार्ड स्वाइप करते हैं हम, तो पीओएस मशीन पे भी स्कीमिंग के ऑप्शन रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सी यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है इसके अंदर, इट्स वेरी सिंपल, कि जो आप मॉल्स में अगर जा रहे हैं, ठीक है, मॉल्स में ये है कि यू आर नॉट, नंबर वन, यू आर नॉट स्वाइपिंग द टेलर। वहाँ पे जो आपका जो भी क्या बोलते हैं, जो वहाँ पर खड़ा है बंदा, वो आपका स्वाइप करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। वहां पर भी आप उसको कहिए कि आप मशीन मेरे को दें। जैसे पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लो आप जो, आई नो माय वीडियो इज वेरी पुअर एक्चुअली, so if you can give me shall we continue with this video or No sir, go ahead with this one, no issue. Okay, so you can take your machine in your hand and then check it, क्योंकि देखिए वो चीज तो हमें ही चेक करना है, स्वाइप मशीन को। यू कैन आस्क, बिकॉज अदरवाइज वहाँ पे फ्रॉड होता है आपके साथ में, इन पर्टिकुलर मॉल जो आपने बताया, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मॉल, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके सर। Now I would like to request Amrit Jangid sir to have few words about the sir's session. Amrit Jangid sir is our faculty at Government Polytechnic College, Barmer. So Amrit Jangid sir, please. थैंक यू प्रशांत सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन राजवंशी सर, आपका सेशन ये इतने कम से टाइम में आपने इतने सारे ब्रॉड इश्यूज को कवर किया जिन्हें हमें नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके सेशन को थोड़ा सा ब्रीफ एंड कंक्लूड करना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑनलाइन लर्निंग के लिए जनरल सेफ्टी टिप्स के बारे में बताया कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हॉनेस्ट एंड एथिकल रहना चाहिए। कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे हम गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसकी नीड है या नहीं नीड है, और साथ ही साथ हमें पेरेंटल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपने हमें बताया फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड किस तरह से होते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि हम जो है मॉल्स में जाते हैं और मॉल्स में अपना बिना सोचे समझे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, वो उसके बाद जो है मोबाइल नंबर के थ्रू वो पिन फाइंड आउट करते हैं एंड देन वो फ्रॉड करते हैं। ये इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एटीएम कार्ड की सेफ्टी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर किया। लाइक हमारे पास जो एटीएम कार्ड के लॉक एंड की का जो कंसेप्ट बताया, जिसको रिलेट किया आपने डिजिट नंबर और हमारे पास एटीएम नंबर से, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। और कभी भी जो है एटीएम कार्ड का यूज़ करते टाइम उसकी लूजनेस को चेक करना चाहिए स्लॉट की। अगर वो स्लॉट लूज रहता है तो हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कई सारी बैंकिंग वेबसाइट्स होते हैं जिनमें हमें ग्रीन लॉक का यूज़ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए देयर इज़ ग्रीन लॉक सिंबल और नॉट, जो हम जब लॉगिन के टाइम यूज़ करते हैं। और लॉगिन के बाद हमें उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें। दूसरा हमारे पास ये है कि एक कॉग्निटिव मोड का यूज़ करें, और साथ ही साथ जो है हमारे पास हर एक ईमेल आईडी और अदर अकाउंट्स को यूज़ करने के बाद उसको लॉग आउट करने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे हमारे पास हैकिंग किस तरह से होती है उसको भी आपने कवर किया। लाइक फेसबुक पे किस तरह से हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं डिजिटल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। 3 तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर हैकिंग की जाती है, फिशिंग, स्टीलर्स एंड स्मार्टफोन हैकिंग। उसके बाद आपने एसएमएस एंड कॉल के बारे में भी बहुत डिटेल से हमें बताया कि उसमें भी हमें किस तरह से अवेयर रहना चाहिए। जो फ्रॉड लिंक्स होते हैं उनको हमें कभी भी जो है क्लिक नहीं करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेरीफाइड। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ रही इस सेशन की। सो फाइनली
आपको सोशल मीडिया जितनी भी है उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ यूज करना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। ओवरऑल आपने जो है इस सेशन में सारे जो स्मॉल इश्यूज है जिनमें हमें इग्नोरेंस जनरली हम जो है कॉमन वन जो है इग्नोर कर देते हैं, उन सबको कवर किया। ये इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत रही और इतने कम टाइम में आपने सारे पॉइंट को कवर किया। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन अगेन। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। ये जो एटीएम कार्ड पे जो 16 डिजिट होते हैं, अगर उन पर टेप चिपका दी जाए, व्हाइट टेप, तो काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप उस पर टेप चिपका देंगे, देखिए अगर आप उस पर टेप चिपका देंगे और वो स्लॉट के अंदर आप डालेंगे उसको, तो पहली बात तो वो आपका स्लॉट के अंदर जाएगा, क्योंकि उसकी जो विड्थ होती है, जो स्लॉट की विड्थ होती है, नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है एक तो वहां पर, नंबर 1। बारीक टेप नंबर 2, listen, first is the mechanical problem. If it is not coming, then numbers you can hide, because the tape जो होती है, जो magnetic tape होती है या जो chip है, that should not be hidden. This is the basic criteria. क्योंकि नंबर जो आपके जो चिप है या जो पीछे मैग्नेटिक टेप है, इधर आपके चिप लगा होगा या मैग्नेटिक टेप होगा, इंफॉर्मेशन जो होगा आपके या तो चिप में स्टोर्ड है या टेप में स्टोर्ड है। नंबर्स इज ओनली फॉर योर डिस्प्ले, फाइन। आप जो क्यू के अंदर कोई दूसरा मतलब उसको हाइड नहीं कर सके या जो दूसरा उसको रीड नहीं कर सके, जो आपने बताया ना, जो लूज डिस्क के अंदर हो, तो उससे सेफ्टी के लिए सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए बड़ा जरूरी है एक्चुअल में, जो फिजिकली जो सामने की एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन है वो 2 तरह की है। एक जो हमारे पास में डिजिटली जो सेव्ड है, यानी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में है या जो हमारा ईएमवी चिप कार्ड्स है उसमें है, तो एक सेफ्टी उसकी भी है। दूसरी जो सेफ्टी है, जैसा कि पेट्रोल पंप कार्ड की हमने बात की, पेट्रोल पंप पे या किसी ग्रोसरी शॉप पे हम जाते हैं तो उसके सामने जो फिजिकल नंबर्स हैं, कई बार उनकी भी जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उन फिजिकल नंबर्स उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो जो टेप चिपकाने वाला है वो उन फिजिकल एक्सेस अगर मान लो गलती से भी किसी को दे दें तो उसको ना देखे, उसके लिए ये जो टिप है वो बड़े काम की है। लेकिन जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है, जो एल्गोरिथम बेस्ड जो हमारा क्या है कि वो एक तरह से वैलिडेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा। तो नो डाउट ये कई जैसे एक्सपर्ट हैं उसको राय भी देते हैं कि जो फिजिकल एक्सेस सामने वाला है, आप अपने लिए भी क्या है, जब क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज उसको नहीं लेते हैं, ये पेमेंट अगर करना है ठीक है, तो जब है इसको चिपका करके ही रखें ताकि मिसप्लेस भी हो जाए, आपका कार्ड भी अगर खो जाए तो कम से कम क्या है कि इतना जल्दी नहीं हो हर चीज को लोगों को एक्सेस कर पाना। शेर मोहम्मद जी, अगर आपकी क्वेरी हो गई हो थैंक यू। तो और किसी की क्वेरी लेते हैं आगे। ओके शेर मोहम्मद जी, तो और भी अगर किसी की अगर क्वेरी हो या कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहे, कोई और टिप देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम जो सेशन है हमारा आज का उसको यहीं पे एंड करेंगे। एनी अदर पार्टिसिपेंट प्लीज। प्रशांत जी, खालिद बोल रहा हूँ। हाँ खालिद जी बताएं। बस ये तो जैसे मेरा तभी बताया कि आप कोई भी आपको ये फ्री है वाईफाई यूज नहीं करना है, स्पेशली रेलवे नेटवर्क के ऊपर। और आज मैं क्या आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने अभी पहला सेशन तो मैंने फिर रेलवे वाईफाई से यूज किया उसको। मैंने कहा शाम को ट्रेन में होऊंगा मैं और डेटा शायद मेरा रह ही नहीं रहे, तो उसमें मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, ओनली सेशन अटेंड किया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक्चुअली व्हाट आई सेड कि नेवर डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूजिंग योर फ्री पब्लिक वाईफाई। आप कीजिए, आप कीजिए, उस पर यूज कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने को नहीं करनी। यस सर। और मतलब क्योंकि अपन यूज किया, हमने अभी पूरा सेशन यूज किया, मैंने कहा आपको भी अभी आपने शेयर भी किया, तो मैंने कहा वो भी डिस्कस कर लो। ठीक सर, ओके, थैंक्स सर। देखो उस समय अगर किसी ने मॉलवेयर अगर डाल दिया है या आपकी पर्सनल आइडेंटिटी चुरा ली है तो वो जरूर थ्रेटफुल है। फ्री इज नथिंग, फ्री कुछ भी नहीं होता है। तो पहला तो कंसेप्ट यही हो कि जहां तक संभव हो, इमरजेंसी नहीं हो, हम कोई भी फ्री ये वाईफाई वगैरह काम ले ही ना। अगर लें तो हमारी जो डिवाइस है उसके अंदर उतने प्रोटेक्शन लेवल होना चाहिए, जैसे हम इनकॉग्निटो मोड की बात करते हैं ठीक है, या हमने हमारे मोबाइल बेस्ड भी अगर हमने ले रखा है एंटीवायरस, तो उससे कम से कम पोर्ट वगैरह बंद हो जाते हैं, या उसकी जो हमारी ऑनलाइन जैसे जितना भी डेटा है वो जितना भी सिक्योर हम कर पाए तो कम से कम उनको हम काम में लें। तो फ्री सर्विसेज एकदम लास्ट कंडीशन है, तभी हमें काम में लेनी चाहिए, ये सजेस्टेड नहीं है कभी भी। ओके, थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग संजय सर। शर्मा सर अगर कुछ कहना चाहें। नहीं सर, सेशन बहुत अच्छा था और जो जनरल टिप्स हमें जो दी गई हैं वो सभी हम यूज करते हैं। कुछ कमियां हमसे होती आई हैं अब तक, पर अब हम कोशिश करेंगे कि जो सर ने हमें चीजें बताई हैं, जो सावधानियां बरतने को कहा है, जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है, वो आगे हम लोग एटलीस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। नितिन सर हमारे बीच में आने के लिए, और आगे भी अगर हमें जरूरत होगी तो सर बेझिझक हम आपको परेशान करेंगे। आप हमारे डिपार्टमेंट के हैं तो हमारा अधिकार भी आप पर ज्यादा है सर। Thank you, बहुत Prashant बहुत ji. धन्यवाद सर। Thank you, Amrit ji. Thank you for providing me such opportunity. Thank you. So dear participants, the session is now closed for 30 minutes only. After at about 2 we will again start our the third session of the day. अजय नागपाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जोशी जी आगे का सेक्शन तो आपका ही है। ये अनुराग जगेटिया सर हैं, वो लेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करूंगा उनको। अच्छा अच्छा, नहीं हम फुल्ली तैयारी कर ले मतलब। नहीं नहीं, तैयारी तो आप हर सेशन के लिए करें, केवल मेरे लिए ना करें सर। चलो चलो, ओके सर, ओके।